हेलो बच्चों, आज मैं फ्रैक्शंस के टाइप्स बताने जा रही हूँ। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दे और साइड में छोटा बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आगे चलते हैं। फ्रैक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। सो फर्स्ट फ्रैक्शंस इज लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस। सो ये लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जिसमें डिनोमिनेटर आर सेम। फ्रैक्शंस like I'm writing you here, fractions which have the same denominator are called fractions. अब same denominator कैसे हुआ? For like example, I am giving you a like 1/2, 3/2, 4/2. So you are seeing here the denominator are same here and numerator is different. So this is the like fractions. Now the next one is unlike fractions. Number 2 is unlike fractions. So what is this unlike fractions? Fractions which are not like fractions. Okay, these are unlike fractions. इसमें क्या होता है? Denominators are not same. It means what? इसमें जो denominators होंगे, denominators are not same. Okay, so इसके examples क्या होंगे? Like examples if I give you like 2/4, 3/5, 8/13, 6/15 and so on. So what do you see here? इसमें denominator क्या है? इसमें denominator क्या है? Same नहीं है. So this is a unlike fraction. Next what comes? It's a unit fraction. So what is unit fractions? So unit fractions, it is a fractions with numerator as 1. With numerator as 1. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें न्यूमरेटर्स जो होंगे 1 रहेंगे and denominator will be different. Like example 1/3, 1/6, 1/7, 1/9. So these are the examples of unit fractions. क्यों? क्योंकि इसमें numerator what you are seeing here, it's all the same. Number 1 है इसमें. So when the numerator is 1, it is a unit fraction. So the next is proper fraction. What it is? Proper fractions. So ये proper fractions क्या होते हैं? So proper fractions में क्या होता है? Fractions whose numerator is less than the denominator. This is the proper fractions. And the value of proper fractions, what will be the value of proper fractions? It will always be less than 1. I am writing here value of the proper fraction is always less than 1.
सो इसे कैसे एक्सप्लेन करें? यू नो, लाइक एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू 2/7, 4/7. Another that I am giving you is 8/9. Now and again 9/11. So in this what you are now and again 9/11. So in this what you are seeing, this is the numerator part, this is the denominator part. You will check this denominator. So what you are seeing here, all the numerators, these are less than the denominator. It means in this one, numerator will always be less than denominator. Okay? Then the next comes number 5. It's a improper fractions. So what is improper fractions? Fraction whose numerator is greater than or equal to the denominator. Okay, and it is always greater than or equal to 1. अब इसे कैसे समझेंगे? For example, like 5/5. You see here, numerator and denominator both are same. So what it is? It is all equal to each other. और इसका वैल्यू क्या है? 1 से इक्वल हो गया. It is greater than or equal to 1. Again one more example, like 8/8. Again these are same. Next 8/5. So in this 8/5, what is here? Numerator is greater and the denominator is smaller. So this is the improper fraction, and so on. तो ये समझ में आया improper fraction क्या होता है? Once again मैं बता देती हूँ. Numerator and denominator same रहा तो it is improper fractions. Secondly, numerator अगर greater रहता है denominator से, then it is a improper fractions. So here numerator is always greater than denominator or equal to denominator. Okay, there is a 2 point. Next comes mixed fraction. So what is this mixed fraction? Mixed fraction क्या होता है? Fraction made up of a whole number and a proper fraction. So this is a mixed fraction or mixed number. अब ये कैसे समझेंगे? सपोज करो कि आप डोमिनोज में गए एंड यू आर आस्किंग फॉर द पिज़्ज़ा. तो आप बोलोगे मुझे खाना है, मुझे एक पूरा पिज़्ज़ा चाहिए और एक पूरा पिज़्ज़ा में से हाफ पार्ट चाहिए. दैट मीन्स व्हाट? यू नीड 1 कंप्लीट होल पिज़्ज़ा एंड द सेकेंड पार्ट जो पूरा पिज़्ज़ा है उसका हाफ पार्ट. सो व्हाट यू विल से? यू नीड 1 कंप्लीट पिज़्ज़ा and you want half part of another pizza. Okay, means this part. So you will say 1, this is the whole one, and in this pizza there is a 2 part. So the 2 part will be 2 part, and out of 2 part you want 1 part, na?
So this is 1.5 part. So this is the mixed fraction. So one more example you can say, like this is 4 by 1/5. So this is the mixed fractions. In this part is termed as integral part. Okay, this is called integral part, and this 1/5, this is called the fractional part. This is what? Fractional part. Okay, now I am telling you about the conversion. Okay, now change improper fraction into mixed fractions. ओके, अब इसे हम कैसे करेंगे? कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. सो लाइक दिस इज द वन नंबर 16/3. सो यू नो दिस इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. अब इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लाना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड द न्यूमरेटर by the denominator. So what you will do? 16 you will divide it by 3. Okay, so how much it will be? 6 5 is 15, and you are getting one remainder. So this is the remainder. This is the quotient. Okay, तो अभी इसमें हम इसको जब मिक्स फ्रैक्शंस में करेंगे तो व्हाट विल बी द आंसर? विल बी quotient you will put as a whole number. This will be coming to as a whole number, and the remainder that is left वो एक fractional part होगा out of the 3 part. So 1 out of 3 part. So this is termed as a fractional number. So the mixed fractions में आपका हो गया 5 whole part and 1/3 more part. So this is a conversion from improper to mixed fraction. Now number 2. Again, to convert it into mixed fractions, one more I am giving you example. This is 41/7. What you will do? You will divide 41 divided by 7. Okay, so you will do what? 41 divided by 7. So it will be coming to 5, 35, and here 6. So the whole number is 5. The whole will be 5. You will write it here. Leftover is 6 part. So 6 part out of which number? 7. So 5, 6 by 7. This is the mixed number. One more. 63/6. Similarly, you will do the number. 63 will be divided by 6. So you will do what? 63 को आप 6 से पहले डिवाइड करोगे तो this will be coming what? 6. This is cancel. Here you will put what? 0 here. This is 3. अभी हम इसका क्या करेंगे? The answer will be what? The whole number is what? 10 and 3/6. But you know, ये जो 3 और 6 है, this can be reduced to a lowest term. यानी अगर 3 को 3 से डिवाइड करते हैं, so if we divide 3/6 with 3
3 factors say, so what it comes? 3 and here comes 2. This is the smallest term. So iske badle mein what you can write here? It can be reduced into more smaller number, that is 10 1 by 2. Okay. The other part is a conversion of mixed number into improper fraction. Improper fraction. अब इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये समझने का चीज है. आई एम टेलिंग यू, लाइक आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. दिस इज बीइंग गिवन एट 8 2 by 3. Okay, so this is the whole one and this is a fractional part. So the first step that you will do is you will multiply 8 with the denominator. The first step is what? Step 1. Multiply the whole number part by the denominator, okay. So what you will do in this one? 8 is the whole number and the denominator is what? 3. 8 2 by 3. So 3 is denominator. This is the whole number. So you will write 8 into 3. It comes to what? 24. Okay. Now step 2. In the step 2 what you will do? Then add the numerator. Add numerator to the product. So this is the number. In this number you will be adding the numerator part, that is 2. This comes to 26. Okay, is it okay? Now the third step. Third step is what? The denominator remains the same, remains unchanged, means same. It will not change. So here the denominator is what? 3. So the 3 will be the same. So what will be the fraction part now? Improper fraction will be 26 you got here, and this by 3. This is not changed. So the final improper fractions from the mixed number is what? This is the improper fraction. Improper fractions. Okay. So one more example that I am giving you is like I am giving you 6 by 7. So what you will do? सबसे पहले this 7 will be multiplied by the whole number 7. 7 into 7 is how much? 49. Now in this 49 what you will add? The numerator 6. So it will comes to what? 55. And the denominator is what? 7. That is unchanged. You will put here in the denominator part 7. So this is the improper fraction. So the next part is how to compare the fractions with unlike numerator and unlike denominator. So the topic is comparison of fractions with unlike numerator
and unlike denominator. अब आप इसे कैसे कंपेयर करेंगे? ओके, फॉर एग्जाम्पल, how to compare, like this is 3/4 and the another one is 5/6. Both are unlike. Numerators are not same, denominators are also not same. So first of all, what you will do, you will take the LCM of the both the denominator part. So LCM of both the things will be what? Like multiples of 4. You will find first of all LCM of, you will take the LCM of 4 and 6. Okay, so multiples क्या होता है 4 and 6 का? Multiples of 4 will be what? Multiples of 4 are, if you multiply this, so 4, 8, 12 and 16 and so on. Similarly, multiples of 6 are what? 6, 12, 18, 24 and so on. Okay. अब इसमें से LCM क्या होता है? The lowest common factor का. So LCM is what? LCM of 4 and 6 is what? Common कौन सा हुआ इन दोनों में? 12. So 12 is your LCM. तो सबसे पहले जब unlike numerator and unlike denominator होता है, तो denominators जो दोनों नंबर होते हैं उसके LCM निकालते हैं. LCM कैसे निकालते हैं? जो नंबर होते हैं उसके मल्टीपल्स पहले निकालते हैं दोनों के, उनके जो कॉमन मल्टीपल्स नंबर होते हैं उसे हम LCM कहते हैं. दिस इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, यू विल हैव टू चेंज द डिनोमिनेटर टू 12. ये जो दोनों डिनोमिनेटर है उसे हम क्या करेंगे? 12 में लाना है. सो व्हाट यू विल डू, पहला नंबर क्या है? फ्रैक्शन इज 3/4, तो यू हैव टू चेंज दिस इनटू व्हाट? 12 में लाना है यहाँ. तो व्हाट यू विल डू, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 3. तो अगर डिनोमिनेटर को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन द सेम विद द न्यूमरेटर ऑल्सो यू विल मल्टीप्लाई बाय 3. सो 3 is 9. So 9/12. Okay. The next, what you will do? Another one is 5/6. अब 5/6 को भी हमें किस में लाना है? We have to convert it into the number जिसमें डिनोमिनेटर 12 हो, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम लाना है दोनों में. अब यू विल चेक हियर, इसमें हम मल्टीप्लाई बाय करेंगे 2. सिमिलरली वी विल मल्टीप्लाई बाय दिस 2. तो इट विल बी कमिंग टू 10 हियर. सो अब इसमें आप क्या चेक कर रहे हैं कि दिस, इन दोनों में द ग्रेटर पार्ट इज व्हाट? 10. इट मीन्स दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन दिस वन, 9/12. So it means what? 10/12 is greater than 9/12. So 10/12 का फ्रैक्शन नंबर क्या है? 5/6. So 5/6 is greater than, इसका क्या वैल्यू हुआ? 3/4. ओके, यहाँ क्या था? 10 is greater than 9. You can see here when the denominator is same, the greater number is always greater here, numerator का. This is there. तो ये जो इसका जो ओरिजिनल वैल्यू है फ्रैक्शन नंबर, दिस इज 5/6. 9/12 ओरिजिनल फ्रैक्शनल नंबर इज व्हाट? 3/4. सो दिस इज द वन. इस तरह से हम इसे कंपेयर करते हैं. सो दिस इज द आंसर. सो वन मोर पार्ट इज देयर, हाउ टू रिड्यूस द फ्रैक्शन इनटू अ लोवेस्ट टर्म. सो रिड्यूस टू lowest term. So reduce to lowest term में क्या बताएंगे? Like suppose the fraction is 18/30
you have to reduce to lowest term. Okay, this is the fraction 18 by 30. We have to reduce it to the lowest term. तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 18 जो न्यूमरेटर का है इसका हम पहले सबसे पहले HCF निकालेंगे. तो इसके जो मल्टीपल्स है, पहले you will see that this is coming to multiply by 2 lowest multiples है and the highest is what, 2 9 is 18. अब 9 उसे हम और भी रिड्यूस कर सकते हैं. That will be coming to what, this will comes to 2 into 3 into 3, 3 into 3. Okay, similarly in 30 सबसे lowest term is what, 2. Then 2 5 is what, 30. 15 can be reduced to more lower one form. So this will be coming to what, 2 into 3 into 5. This is the one. And now you have to check the HCF. So this will be what, in दोनों में common जो factors होते हैं you will take. So here 2 is there and 1 3 is there common. So 2 into 3. So this comes to what, 6. So HCF is 6. अब क्या करेंगे, रिड्यूस करना है लोवेस्ट टर्म में. तो 18 और 30 जो डिनोमिनेटर है दिस विल डिवाइड बाय 6. दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 6. So when we divide 18 by 6 it comes to 3 and 30 is divided by 6 it comes to 5. So this is the lowest term. इसके बाद हम इसे और रिड्यूस नहीं कर सकते. These are the number which is divisible by their own number. So this is the one method that you can do. This another method is what, we can divide. This is the first method that I showed you. The another method is what, we can divide what, we can divide 18 and 30 by their common factor, by their common factors. So common factors क्या होगा, like 18 is divided by 30. तो इन दोनों में सबसे पहले कॉमन फैक्टर व्हाट वी कैन डू, सबसे छोटा नंबर क्या होता है 2. तो सपोज हमने इसे डिवाइड किया बाय 2, बोथ द वन, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2. सो यू विल बी गेटिंग व्हाट 6. यहाँ कितना हो गया, सॉरी, दिस विल बी योर 9 एंड दिस विल बी योर 15. अब इसे फर्दर अगर हमें डिवाइड करना है, सो अगेन वी विल डिवाइड दिस 9 by 15 by which number? We will divide this by 3. Similarly, this will be divided by 3. This comes to 3 3 9 and 3 5 15. So this is also the one method कि आप छोटे लोवेस्ट नंबर से जो इन दोनों में कॉमन होते हैं उससे आप डिवाइड करते जाइए जब तक कि एक स्मॉलेस्ट लोवेस्ट टर्म्स नहीं मिलते. तो ये आपका हुआ लोवेस्ट टर्म. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दे. साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कीजिए.